because I've been lucky in my field. There have been a lot of women who've done what I do, and they've paved the way for women like me. But I have a unique set of panelists and speakers and guests who've done first as women in their fields or are achieving things in their fields that even men have not done. So right next to me is Sanobar Pardiwala. She's a stunt woman who's plying her trade in the Indian film industry. And obviously, as stunts go or action goes, we associate it as much as we do with men and not so much with women. So she is one of those women who's leading the charge and paving the way for more women to do things that are often considered to be male-dominated. Next to her is Yogita Raghuvanshi, who's also India's first truck driver. Another act or a profession that is considered about men, isn't it? Right? Is truck driving for men? Yes or no? Not anymore, exactly. The answer is not anymore because of women like Yogita. On the very far corner is CA Bhavani, who's India's fencer. Fencing is a lesser known sport in India. So for a women athlete to come in a sport like that, which is also a fighting sport, right, with a sword, or fence, I should say, and that too, she's reached a level that even male fencers in India have not. She's just coming of the World Championships, and before that, you won India's first fencing medal at the Asian Championships. So a big round of applause for CA Bhavani as well, because she's winning medals where no Indian has won before. And also, last but not the least, Chandraprabha Ramkete. She's joining us. She is an earth mover. She moves heavy, she works on heavy machinery, heavy vehicles, and she is one of the first and the very few women who do this. So, as I make that introduction, I do want our audiences to please encourage our speakers with a big round of applause. It is because of women like you that more and more women are visible and visible in fields that were not associated with them. Sanobar, let me begin with you. Was it always a dream for you to do stunts? Is this something you grew up wanting, or is this just something that happened to you, and why? Well, it's very important how you grow in life and how you are raised. It is very important, and it plays an utmost major chunk in your life. It takes away and it gives you a lot. So when I was 12, I auditioned for my first shoot, and that was the moment, that was that epiphany when I realized that this is something that I'm very good at doing and I want to continue doing it. Because I realized the whole purpose of education is in the end doing something and enhancing your talent in what you're good at. And I realized that at the age of 12 when I performed my first stunt. And since But how did you get into doing stunts? I was a black belt in karate. I was also a gymnast and a very good swimmer, and even better underwater swimmer. I could hold my breath for 2 minutes at that time. So a lot of these skills build up your reflexes. I'm also an advanced deep sea diver and a skydiver. I hold a lot of records for the same too. And yes, so that is how it enhances your reflexes. And because your reflexes are enhanced in a particular manner, the way you react, and in the split second the way you react when you're supposed to whilst performing stunts is something that is built over a period of time, and I realized it. You realized it when you were 12? I realized it when I was 12. Wow, wonderful. Well, that is one thing that really helps, knowing exactly what you want. But before I go to our other guests, Sanobar, I do want to ask you, it is very difficult for women to be taken seriously, even in fields that are not so male-dominated. But your field was not associated with women at all. There were no roles where women would perform stunts. So forget about having a woman, stunt master. So I want to understand from you, how difficult was it for you, or was it difficult for you to be taken seriously in the industry? Well, to be taken seriously, you had to outperform what a guy could not do. In fact, you had to perform better than them, and at the same time, it's not easy. It is difficult because, let's say, even if you, at the end of the day, I'll give you one small vague example. I was called for a bike riding shoot. And it was this very simple shot. I didn't have to do any tricks, nothing, just ride the bike, point A, point B. And just before the take,
the director asks me in front of everyone in the loud mic saying, "Can you ride a bike? Are you sure you can ride the bike? Wait, Wow. stop." And I'm like, "Didn't you see me ride a bike to the shoot? Isn't that what I'm hired for?" Yeah. So even though you were hired for that job, the director was uncertain you could do that job. Just before the take, he was absolutely uncertain that I could do it or not. And that is where you have to take criticism, and you have to take things with a pinch of salt and a pound of positivity. Absolutely. Well, other than that, you wouldn't be able to do it. But Yogita, I want to come to you. You're India's first truck driver. If I have it correct, आपने एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद ट्रक ड्राइविंग शुरू करी. आपने लॉ पढ़ी थी, लेकिन आप लॉयर का काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपको लगता था कि उसमें आपको सेटल होने में और पैसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा. लेकिन ट्रक इजी मनी था या क्विक मनी था. एम आई राइट? या बट ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा काम है जो महिलाएं करती ही नहीं थी. नो वुमन वाज डूइंग दिस बिफोर यू. सो व्हाई वुड यू इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस? एंड वाज देयर नॉट अ डाउट दैट आई कैन डू दिस? मेरी सोच ये थी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती. ये जो सोच थी कि महिलाएं ये काम नहीं करती है, ये उन लोगों की सोच है. मेरी सोच तो नहीं थी ना, तो मेरी सोच नहीं थी तो मैं कर सकती हूँ. जी बिल्कुल. बट आपको लोगों ने कुछ डराया, कुछ ये भी कहा होगा कि आप मत करिए, बड़ा रिस्की काम है. ट्रक ड्राइविंग आप करोगे तो पूरे देश में आपको जाना होगा, अकेले जाना होगा, बाकी ट्रक ड्राइवर्स के साथ रुकना होगा, क्योंकि आपके फील्ड में तो मर्द ही मर्द है. तो वो कैसे टैकल किया आपने? बाकी लोग तो बाद में कहेंगे, सबसे पहले तो घर से शुरुआत होती है. तो घर में ही सबसे पहले पापा ने मना किया, भाई ने मना किया. मैंने नहीं सुना उनका कुछ, मतलब जो भी उन्होंने कहा, और मैंने तो वही किया जो मुझे करना था, और उसी में आगे बढ़ी और आज भी कर रही हूँ. लेकिन करते करते क्या चैलेंजेस आपने देखे, जो सिर्फ वो चैलेंजेस थे जो आपकी कैपेबिलिटी से रिलेटेड नहीं थे, सिर्फ उस चीज से रिलेटेड थे कि आप एक महिला हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज ये था कि पब्लिक, मतलब आम जो लोगों के बीच मेरी गाड़ी जाती है और आती या रुकती, या फिर मैं जैसे टायर वाले के यहाँ पे रुकी है गाड़ी और मैं कह रही हूँ कि भैया टायर बनाएंगे, तो वो स्कूटर लेके गाड़ी के मतलब दुकान के पास आ जाता है, बोलता बनाता है. फिर मैं कहती हूँ भैया मेरा गाड़ी का टायर बनाएंगे, तो बोले ये स्कूटर आपकी नहीं है. मैंने कहा नहीं, मेरी वो ट्रक है, उसका टायर बनाएंगे. तो आपकी गाड़ी नहीं पहचान पाते थे वो? हाँ, मतलब कभी सोचा ही नहीं उन लोगों ने कि ट्रक आपका हो सकता है. और ऐसे ही हाथ से सभी दूर ज्यादातर हुए. मतलब बाकी ट्रक ड्राइवर्स ने आपको देख के कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने आपको इनकरेज किया, आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करी, लेकिन या बाकी मर्द को लगता था कि ये औरत कहाँ से आ गई हमारे बीच में? ढाबे के ऊपर जब आधी रात में ड्राइवर्स लोग चाय पीते थे, मैं भी पीने के लिए ब्रेक मारी और गई, तो सारे इस नज़र से देख रहे थे कि कहाँ से आ गई है और क्या है, और ये चाय पी रही है. मतलब मेन तो महिला रात में, आधी रात में ड्राइवर्स लोगों के बीच में जाके चाय तो पिएगी नहीं डिमांड करके. तो आप जाती थी उनके बीच में? हाँ, क्योंकि मुझे रात भर जैसे मेरे पास टमाटर लोड है तो मुझे रात भर ड्राइव करना है. हाँ. तो मुझे चाय की जरूरत तो पड़ती थी नींद को भगाने के लिए. आपको कभी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ दिक्कत हुई, कुछ मुश्किलें आई? एज ए वुमेन, मतलब महिला होने के नाते मुझे सेफ्टी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि किसी भी ड्राइवर या फिर मतलब जेंट्स लोगों के बीच जब मैं गई तो मुझे उनसे असुरक्षा महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उनके नज़रिए से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था. जी. तो मतलब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ये लोग कुछ भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मैं बाकायदा 2 बिस्किट लेती हूँ, चाय लेती हूँ, चाय पीती हूँ, और जब सारे लोग मेरे पे नज़र रखते हैं कि ये कहाँ जाती है देखते हैं, और जब ट्रक में बैठ के ट्रक चलाती हूँ तो मुझे सैल्यूट मारते हैं. अच्छा. You know, this is a very important lesson as women. I think all of us understand this. कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करें, कॉन्फिडेंस के साथ चलें, तो लोगों को वो दिखता है, और आपके सामने अगर कोई गलत नज़रिए का मर्द है भी तो वो भी आपसे ज़रा 2 कदम दूर ही रहेगा, अगर आप वो कॉन्फिडेंस एग्ज्यूट करते हैं तो. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो योगिता ने बोली, एज विमेन, एज यंग गर्ल्स, स्पेशली इन सिटीज़ और इवन इन स्मॉलर सिटीज़ और टाउन्स,
हम लोग घर से 10-11 बजे के बाद निकलते भी नहीं हैं और यहाँ पे योगिता अकेले ट्रक ड्राइविंग कर रही है अराउंड द वर्ल्ड ऑन हाईवेज विच आर barely lit and stopping at dhabas and also I think she deserves a big round of applause for just having that heart to do so. To just think कि मैं कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? जी योगिता जी, हाँ बिल्कुल, कभी डाउट नहीं हुआ? नहीं कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल 1% या -0.1% भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल जी। क्योंकि मैं कर सकती हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे मैं हैंडल करूँगी। और मैंने महसूस किया कि एक एक प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हुए जब आगे बढ़ रहे तो पता नहीं कैसे अपने आप ही ऊपर वाला सारे रास्ते खोलते हुए चलता है। जी बिल्कुल, उस पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। चंद्रप्रभा जी भी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने वो काम किया है जो महिलाएं नहीं करती थी। आप एक अर्थ मूवर हैं, आप बड़ी बड़ी मशीनरी और व्हीकल्स चलाती हैं, तो हम मुझे अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये काम आपने क्यों शुरू किया? आपके हस्बैंड करते थे उसी कंपनी में? नहीं, उसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कंपनी में काम करते थे। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स हैं वो आपने चलाना शुरू किया। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम थोड़ा सा माइक ऊपर करिए। पियून भी सब बनते हैं, पियून चपरासी भी बनते हैं, यानी सब काम करने वाले बनते हैं, लेकिन ऐसा हेवी मशीन चलाने वाले कोई नहीं बनते। तो हमने सोचा कि हम नया कुछ करके दिखाएंगे। और फिर मेरे को बहुत लोगों ने डरा है कि खदान है, वहाँ मर जाते हैं, घुटने टूटते हैं, कमर टूटती है, और वो जेंट्स का काम है, लेडीज का काम नहीं है। फिर भी मैंने बोली कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी और कर सकती हूँ जी, और आगे बढ़ गई मैं। मेरे को सपोर्ट सब लोगों ने किया, मेरे ऑफिसर लोगों ने, सबने सपोर्ट किया जी। और कोई कोई डराते थे कि नहीं करना करके, लेकिन घर का भी सपोर्ट अच्छा था कि आप कर सकती हो जी, मैं करके दिखाई। चलिए चंद्रप्रभा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं। ये ऐसे फील्ड्स हैं, आप नोटिस करेंगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं बहुत ही फिजिकल फील्ड्स में हैं, तो उनका जो फील्ड है वो ऐसे फील्ड्स हैं जो महिलाओं और मर्दों के बीच में जो एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है वो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। आई थिंक वी कैन एक्सेप्ट दैट men are bigger, often stronger than us. That's just how it is. That's how our biology, physiology is. लेकिन आपके वो फील्ड्स हैं जिसमें स्ट्रेंथ लगती है और डेंजरस फील्ड्स हैं। तो चंद्रप्रभा जी, आपको कभी लगा कि आपकी बॉडी में वो उतनी ताकत नहीं है जो जरूरी है आपके फील्ड के लिए? हाँ, लगा ना मैडम। लगा। हाँ। तो कैसे आपने ओवरकम किया? जब स्टार्टिंग में जब मशीन पे चले गई ना मैं, तो वो मशीन देख के मुझे भी डर लग गया। तो ऐसा धीरे धीरे पैर वगैरह डालना था मेरे को, और वो मशीन के ऊपर चढ़ना था, फिर बटन दबाना था, क्या करना था ये मेरे को नहीं समझ में आता था। लेकिन कोई कोई जेंट्स ऐसे रहते हैं कि चलो मैडम आपको इच्छा है तो चलो आपको सिखा देते हैं जी। तो मैं पहले तो वो क्या बोलते पीसी सीख गई मैं। फिर बाद में शावेल बोले तो पूरे खदान की एक मात्र ऐसी बड़ी मशीन है कि चार बकेट उसमें डाले तो एक डंपर फुल हो जाता है। तो फिर मेरे को सब लोग डराते थे कि ये शक्तिशाली मैडम का काम है, आपका काम नहीं है, आप मत करो ये काम, आप छोटा मोटा काम कर लो, कुछ भी मांग लो। नहीं, मेरे को वही करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। ऐसा बिल्कुल। सो बेसिकली इवन इफ देयर आर इश्यूज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ यू कैन ओवरकम इट। अगर आपके पास बिलीफ है और कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, यू कैन ओवरकम। बिल्कुल कर सकते मैम, बिल्कुल कर सकते सारा। तो आप मुझे बताइए, आपके फैमिली में बच्चे हैं आपके? हाँ, लड़की एक लड़का है? एक लड़की। अच्छा, तो आप अपनी लड़की के लिए क्या चाह रही हैं? अब क्या करे वो? लड़की के लिए जी, लड़की के लिए वो भी मेरे जैसी स्ट्रांग बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। All right. Let me go across to Bhavani Devi as well, who's the sports star and athlete on the panel. Bhavani, you are playing a sport which is not very well known in India. On top of that, it is a sport which is physical. It's not, I mean, you obviously do touch your opponent, but not quite in contact sport. But was there ever a time that you were discouraged from playing this sport? Ki, why don't you as a woman maybe play something else that would be better for you? Hi. First of all, thank you for having me. I'm really honored to be here.
So yes, in the beginning of my career, I always faced these questions, but from outside, not from my family. So always people or my friends, mothers or father, they always tell me like, Bhavani, I think fencing is not for India. Why you waste your time and energy? Better focus on your education, get a job, do something else. You can't build a career in fencing. But for me, I understand from their concern, but they don't know what sports life is. Not all people who do sports achieve Can be in the successful. sports, whether Yeah. it is popular sports or not popular sport. Yeah. But for me, fencing, the first ever competition in fencing was the school games. I lost my match, but all my schoolmates, my teammates got medal. So from that day, I thought like I want to do something in this sport, not in the district level, but I want to win something for India. So that's what kept me motivated. But for me, the most important thing which I had with me was I want to do my 100% effort, whether I have money or not, whether I have support or not. From my side, after I leave the sport, I don't want to feel regret. Oh, I should have tried. Maybe I could have tried. Maybe I could have taken loan, or I could have go for this competition. But I know that I will work hard. I know I'm ready to work hard. I know I can do something, but I don't know what. But I want to try for it for 100%. And for that, my family has stood by me all the tough times. I think it's because of their support and strength which kept me going forward whenever I face so much of problem. Yes. Your Yes. mother is Yes. actually here. So I'm guessing your mother has played a big part in your Yes, life, as yes. always, as is the case for all of us. Yes, I think she's the Shakti which I have in my life, which kept me going to this level in this sport, and to whatever level I go in this sport in my life. It's only because of her. Because we had so much financial problem in the initial stage. We had to take loans for like 20 lakhs or 25 lakhs. I can say one thing as an example. I was going for a competition, and she was trying to get funds, and it was delayed. So I took the flight because we pay for the flight tickets later. So I took the flight, I arrived to the airport, but I don't have money to go to the hotel. So I stayed that night in the airport, and then the next morning she sent me the money, and then I went to the hotel. So in the beginning it was so hard. But for me, I want to do, I want to try, I want to feel happiness by Yes. trying. So whether I get the result or not, it's the secondary thing. So that's what my mom always says. When even I thought like, Mom, maybe I think I should stop. It's too much for our family. I can see what they are struggling. So she said, no, you started it. And Go till the end. Absolutely. Amazing. A big round of applause for mothers like that who encourage their daughters. Bhavani, very quickly, I want to understand from you. I interact with a lot of athletes and female athletes as well. What is that one issue that female athletes face when they play sports? Is there still an issue? Which is yeah. what men may not face, but women face? Is there something? I think the most common thing which I feel still happening is because in sports sometimes you get the result early or later. But if women doesn't get results in the earlier stage, it's difficult for the parents or the society To let them continue. They think, oh, it's finished, you cannot do. But for men, it's not the same. They will try. It's okay. It's not. It's okay for Very- men. For women, it's a little No, bit very hard. important point you made, that if a woman is not successful early in her career, then the pressure builds to get married and maybe, build a family. For men, that pressure is not there. So, very important point there. I have final minutes left. Sanobar, I want to come back to you. Do you want to share a stunt that was one of the toughest ones you have done and you did better than any man around? Well, this was for the movie Ravan that I had performed, and this was a sequence where we jumped off a cliff, which was around 300 feet high. The ideal shot was to jump from the cliff next to the waterfall. She doesn't die, so the person doesn't die. Aishwarya doesn't die in that shot, and she falls through the trees, rivers, rocks, branches, trees, rivers, rocks, branches, and then finally into the river. She survives that fall, 300 feet. And we did that in Ethirapalli rainforest in Kerala, and it was one of the most mesmerizing stunts ever. We won. I got nominated for the Taurus World Stunt Awards in 2006 for the same. Okay, excellent. Well done. I do thank all of the lovely ladies for being here. Yogita ji, Chandraprabha ji, Bhavani, Sanobar, thank you so much for being here. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.